Good morning class. I welcome to you all our TMPS online classes. Today in science we will continue the chapter number 12, force of friction. We already studied about what is friction and what are the properties of friction. Now we will study about factors affecting frictions and use of friction and harmful effect of friction. Today we will cover these three topics in our class. What are the factors that affect friction? Means factor affect friction, how the friction increase and how the friction decrease in these two factors. There are two factors that affect friction, that is nature of the surface and second depend on the mass of the object. What is the nature of the surface? Nature of the surface means the surface is smooth or rough. There are the two types of surface, smooth surface or rough surface. ठीक है, तो friction depend on the nature of the surface. If suppose there was a smooth surface, तो you will fall apart in a smooth surface. Why? आप smooth surface में गिरने के आपके chances ज़्यादा होते हैं as comparison to the rough surface. Basically surface are the rough surface. ठीक है, ज़्यादातर most surface are the rough. ठीक है, ज़्यादातर surface क्या होते हैं? You are taking a suppose you have a table. ठीक है, तो if you observe it with a magnified glass, you will find some roughness on that table, on your table. आप अपने उस टेबल पे आप with the help of magnified glass आप देखोगे तो you will find some rough surface on that table बेटा. तो that is means कि most surface are the rough surface, but friction is more on the rough surface. Friction क्या होता है? ज्यादातर किस पे होता है? रफ सरफेस में एज कंपैरिजन टू द स्मूथ सरफेस. ठीक है, स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम होता है एंड रफ सरफेस में क्या होता है? फ्रिक्शन ज्यादा होता है. रफ सरफेस हैज लार्जर इनरेगुलरिटीज. ठीक है, रफ सरफेस क्या होते हैं? उसके पास इनरेगुलरिटीज ज्यादा होती है. ठीक है, दे आर नॉट प्लेन. ठीक है, दे आर नॉट इजी टू यू आर नॉट इजी टू वॉक ऑन द रफ रोड. ओके, आप रफ रोड में वॉक करना या व्हीकल चलाना इजीली नहीं होता. तो यू नीड मोर फोर्स फॉर दैट. ठीक है, आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की जरूरत होती है. दैट इंक्रीजेस द फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन इंक्रीज करता है. तो नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट सरफेस मींस कि रफर द सरफेस द मोर इज द फ्रिक्शन. जितना सरफेस रफ होगा उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा होगा. सेकेंड ऑब्जेक्ट अफेक्ट फैक्टर डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. If you are lifting a empty box, suppose mass of the object means weight of the box. ठीक है, if you are lifting a empty box, you push the empty box, but the force is very less. You have to spend less amount of energy by lifting an empty box. आप empty box को push करोगे, but with a less amount of energy. But on the other hand, if you are lifting a heavy box and you push the heavy box, you apply more force on that. ठीक है, आपको heavy box में ज्यादा force apply करना पड़ेगा rather than the empty box में. तो if the object is heavy and you apply more force, it means the friction is more. The more the force, the more is the friction. ज्यादा जितना ही हम force लगाएंगे उतना ही friction होगा. ठीक है, it means कि friction also increase if two surface in contact and are pressed hard. अगर friction also increase होता है कैसे? तब two objects दोनों को बहुत ही ज्यादा हार्डली प्रेस किया जाए. This can be experienced by dragging a mat. ये कैसे आप एक्सपीरियंस करते हो? आप when you are dragging a mat, ठीक है, मैट क्या होता है? जो घर पे हम बिछाते हैं उन्हें कहते हैं alone. ठीक है, the mat is heavy and you are dragging the mat alone. The friction is also increased by that. ठीक है, by dragging a mat the friction is also increased. So we study the two factors. One is nature of surface and depend on the mass of the surface object. Second, now we will study use of the friction. Where the friction use? Friction कहाँ use होता है? First, friction enable us to walk. Friction, the land, the between the feet and the land. ठीक है, between the feet and the ground. Enable friction help us in between the ground and the feet. जो हमारे feet और ग्राउंड के बीच में जो डिस्टेंस जो फीट होता है उसमें जो वॉक करने के लिए होता है फ्रिक्शन उसमें यूज होता है. ठीक है, इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन यू विल फॉल अपार्ट. अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, द सरफेस इज स्मूथ, तो यू विल फॉल अपार्ट. आप गिरने के चांसेस आपके उतने ज्यादा होते हैं. सेकेंड, स्लो डाउन और स्टॉप द मोशन ऑफ द व्हीकल. फ्रिक्शन हेल्प अस इन स्लो डाउन द हाउ कि द बिटवीन द टायर्स
with friction between the wheels and brakes, जो brakes और wheels होते हैं, जो wheels and the brakes between the vehicles that help in slow down or stop the motion of the vehicles को रुकने में या उन्हें स्लो डाउन धीरे करने में फ्रिक्शन हेल्प करता है. The third, friction enable us to write. Yes, friction help us to enable write. Friction help us in holding a pen. ठीक है, फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है किसमें, और पेन को होल्ड करने में. The third, fourth is lighting a matchstick. Yes, friction help us in lighting a matchstick. ठीक है, उसमें मैचस्टिक को लाइट जलाने में हेल्प करता है. Car and buses are able to move only due to friction. कार एंड बसेस क्यों मूव करते हैं, सिर्फ फ्रिक्शन के लिए, बिकॉज द रोड्स एंड टायर्स, बिकॉज द रोड्स और टायर्स में देयर इज अ फ्रिक्शन. ठीक है, बिकॉज इन टायर्स देयर वाज अ स्पाइक्स, मींस टायर्स जिसमें थोड़े से काटे होते हैं, दैट हेल्प इन हैंडलिंग द, मतलब ग्रैब करते हैं क्या, ग्राउंड को ग्रैब करने में हेल्प करते हैं, जिससे टायर्स और कार्स और व्हीकल्स मूव करते हैं. बसेस होल्ड अ नेल इन द वॉल. ठीक है, वॉल्स में जो नेल्स जो कीले ठोके जाते हैं, दैट इन फ्रिक्शन हेल्प अस इन holding a nails in the walls. Also I told you car and buses in friction help us in moving the car and buses. So these are the uses of the friction. Now what are the harmful effect of friction? Friction के harmful effect क्या है, क्या क्या friction हमें harm कर सकता है. Everything has a advantage but has a disadvantage also. So there is a advantage of frictions, but what are the disadvantage of frictions? Machines parts get heated. ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन. एज यू नो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, हीट. दैट इज व्हाई मशीन पार्ट्स गेट हीटेड इजीली. जो मशीन पार्ट्स होते हैं, बस, कार्स, व्हीकल्स गेट हीटेड, सो दैट दे नीड टू रिपेयर और रिप्लेस आफ्टर सम टाइम. तभी अगर वो हीट हो जाते हैं तो वी नीड टू गेट रिपेयर और रिप्लेस देम इजीली. हमें उन्हें फ्रॉम टाइम टू टाइम उन्हें रिपेयर भी कराना पड़ता है और उन्हें रिप्लेस भी कराना पड़ता है. तो दैट इज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन. कॉजेज एंड वियर एंड टियर. ठीक है, फ्रिक्शन आल्सो कॉज वियर एंड टियर ऑफ मटेरियल्स लाइक स्क्रू, बॉल्स. ठीक है, शूज, सोल ऑफ शूज, टायर्स ऑफ व्हीकल्स क्या होते हैं, दे आर इजीली गेट ड्रॉप्ड. वो बहुत जल्दी खराब भी हो जाते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन. तो उन्हें निकाल के, वेयर एंड टियर मतलब फाड़ देना या निकल जाना, और उन्हें रिप्लेस कर देना. दैट ऑल्सो कॉज बाय द फ्रिक्शन. ठीक है. Second, friction cause wastage of energy. Yes, suppose your father driving a car in a rough surface area. आपके father drive कर रहे हैं car rough surface area में, and that rough surface area need more energy because the car your father driving a car in a rough surface area, and और आपको rough surface area में गाड़ी चलाने के लिए need more energy. आपको energy ज्यादा चाहिए होती है. तो जैसे I told you, the more the rougher the surface, the more is the friction. जितना surface rough होगा उतना ही friction ज्यादा होगा. तो that is why we need a wastage of energy. बहुत energy waste होती है by driving a car in the rough surface area. ठीक है, moving a car due to the friction between the roads and the wheels. This lead to heating up the, और क्या होता है इससे, क्या होता है, heating up the vehicles का engine, heating up the engine. vehicles के जो engines होते हैं also heated up due to the वेस्ट. ज्यादा रफ सरफेस में हम अगर गाड़ी चलाते हैं तो उससे एनर्जी भी वेस्ट होती है, प्लस इंजन भी हीट अप करते हैं. तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शंस. ठीक है, फ्रिक्शन आल्सो अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्टॉप द ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट, मतलब ऑब्जेक्ट के हमेशा अपोजिट चलता है, और समटाइम इट स्टॉप द ऑब्जेक्ट, और कभी कभी वो ऑब्जेक्ट को भी स्टॉप करता है. तो दीज आर द uses of frictions, disadvantage of frictions and advantage of frictions, and also studied about the factors affecting friction. So this is a complete chapter here. If you have a doubt, ask me in the comment section. Till then, take care and please read the chapter at your home once again. Thank you class. Have a good day.